So hello guys and welcome back to my channel. This is Amir Kirtikar and I'm a second year MBBS student at GMC Mumbai. On 3rd May, my channel completed 2 long years on YouTube and it has been a fun place to be at for 2 long years. And many of you were commenting that I should make a video about what was my last 2 month strategy for NEET. So I just remembered कि मैंने ऐसा एक वीडियो पहले बनाया है. So I thought that rather than repeating the same kind of video, I can just tell you 4 crisp and short tips which I honestly believe actually doubled my NEET score. I'll tell you a short anecdote कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, that was I guess somewhere around November 2019 and मेरी नीट हुई September 2020 में. तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, मेरा स्कोर कुछ 350-400 तक आता था. And in my actual NEET exam, I scored like a 600 plus. So now what were the 4 crisp and short tips which actually doubled my NEET score? So let's begin. Okay, so first is a very short physics की trick. I don't know ये physics की trick तुम्हें कोई टीचर ने बताई है नहीं बताई है, but I guess मुझे ये अविनाश सर ने बताई थी and I absolutely love this physics trick. कि देखो इससे तुम्हें सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं होंगे, बट आई कैन टेल यू कि तुम्हारे 45 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस जो मैं नहीं छूट रहे ऐसे टाइप के होते हैं ना कुछ, जिसमें दे वांट द ऑप्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस वैल्यू, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज बट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस यूनिट्स, जैसे नंबर, डेंसिटी, डायमीटर वगैरह. ये क्वेश्चन था ना, मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ बिकॉज एंड यहाँ पे दे भी दूंगा, सुनना. The mean free path for a gas with molecular diameter D and number density N can be expressed as. अभी ये तो ऑप्शंस देखकर ही मेरा सर चकरा गया था. And you could see here that I had also left this question, like I had circled it and I had starred it, but because I was on the verge of leaving the question. But then मेरे पास एक बैकअप टेक्निक होती थी, that was solving a question dimensionally. अभी आई नो कि उनको चाहिए मीन फ्री पाथ. नाउ मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द टर्म्स ऑफ लेंथ. ओके, लेंथ उसका डायमेंशन एल होगा. एक क्वांटिटी जो दी है वो दी है डायमीटर विच इज एल, एंड सेकंड क्वांटिटी जो दी है वो दैट इज नंबर डेंसिटी. तो नंबर डेंसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर लेंथ क्यूब. बस इतना ही क्वेश्चन. आई फाउंड आउट द डायमेंशंस फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस एंड उसमें से दिस वाज द ओनली ऑप्शन जिसका डायमेंशन एल आ रहा था सिर्फ, एंड आई मार्क दैट आंसर एंड इट ऑल्सो वॉज राइट. समथिंग एज सिंपल एज डायमेंशंस कैन हेल्प यू सॉल्व सच अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स. सो दिस इज माई फर्स्ट एंड वेरी सॉलिड टिप कि ऐसे 2 तो क्वेश्चन फिजिक्स में होते ही है, तो अगर तुम्हें नहीं भी छूट रहा है क्वेश्चन तो सॉल्व इट डायमेंशनली, तुम्हारा ऑप्शन हल हो जाएगा. नाउ द सेकंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो ना रिमाइंडर में अभी भी खुद को देते रहता हूँ कि जब तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, प्लीज 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 रीड द होल क्वेश्चन and all the 4 options. It might be time consuming but it will save you from negative marking, and ये मेरी negative marking हुई पिछले साल. एंड ना मैंने घर आने के बाद खुद को इतना कोसा ना इसके बाद, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई जस्ट विश दैट ये टेक्निक मैं भी थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किया होता. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 82 इन बायोलॉजी. इट वाज नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. नाउ आई न्यू दैट डीएनए हेलिक्स ओपन करना है, ठीक है. नाउ आई ऑल्सो न्यू दैट इट इज ट्रांसक्रिप्शन, बट बात ये हुई ना, आई डिड नॉट फोकस ऑन द वर्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड मैंने डीएनए हेलिक्स का ओपनिंग देखा एंड आई सॉ डीएनए हेलिकेज इन द ऑप्शन एंड आई ब्लाइंडली मार्क्ड द आंसर एज डीएनए हेलिकेज. व्हेन आई केम होम एंड आई सॉ दैट ये मेरी नेगेटिव मार्किंग कैसी हुई. अ क्वेश्चन एज सिंपल एज दिस, हाउ डिड आई स्क्रू दिस क्वेश्चन अप? देन आई रेड द वर्ड विच वॉज ट्रांसक्रिप्शन, जिसको मैंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था घाई घाई में, एंड इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन रॉन्ग गया. वरना मेरा बायोलॉजी का स्कोर 355 आ जाता, मेरा एक ही क्वेश्चन रॉन्ग गया था. बट अनफॉर्चुनेटली आई स्टक माई बायोलॉजी स्कोर टू 345. नेवरदलेस आई डोंट रिग्रेट दैट, बट मैं इतना तुम्हें तो बोल सकता हूँ कि यार ये गलती तुम लोग रिपीट मत करो. रीड द होल क्वेश्चन, रीड ऑल द 4 ऑप्शंस, दो इट माइट टेक सम टाइम. ऑफकोर्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, बट 90% क्वेश्चंस जो होते हैं ना, देयर माइट बी सम ट्विस्ट. जैसे कि दे डिड नॉट स्टॉप एट ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स. अगर सिर्फ ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स होता then my answer was absolutely correct, which is DNA helicase, but they had mentioned the word transcription which changes the answer to RNA polymerase. So this is my go to tip कि यार आधी गलतियां तो ऐसी होती है that we do a lot of haste, we just haste makes waste. I believe in this saying very truly. Now the next tip what I want to give you all is the 5-1 rule. I fondly call it 5-1 rule, and this was told to me by one of my chemistry teachers, that is Tushar sir, and this tip is a very helpful tip. I'll tell you
कि बहुत बार ऐसे होता है ना दैट यू सॉल्व द होल पेपर एंड बाद में ऐसी बात होती है कि यू आर स्टक ऑन लाइक 4-5 क्वेश्चंस एंड तुम्हें वो नहीं आ रहे हैं एंड ऐसे कि देर आर 5 क्वेश्चंस ऐसे जिनमें तुम्हें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है. बहुत बार ऐसे होता है दैट यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, यू नो. तो इन दैट केस आई कैन टेल यू अ टेक्निक जिससे तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हुई भी तो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे नहीं. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैं क्या बकवास बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी, सी, बिलीव दैट देयर आर 5 क्वेश्चंस, राइट, कि जिनमें तुम्हें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है. एंड ऐसा होता है, मेरे क्वेश्चन पेपर मेरे एंड में से 10 क्वेश्चंस बचे थे जिनमें मुझे 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन था. नाउ आई विल टेल यू, पहले तो कंफर्म करो कि जो 5 क्वेश्चंस में तुम बोल रहे हो कि ये 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, like the 2 options in which you're confused, either of them has to be the answer. You should be sure on this thing at least, कि either this one or that one. इतना ही, like you have to narrow down it to 2 options, correct? Now, ऐसे होता है कि that reduces the probability of the answer to 50%, which was initially 25%, की 25% probability थी 4 में से एक ऑप्शन. अभी तुम्हारे 2 में से एक ऑप्शन चूज करना है, ओके? अभी ये सोचो कि there are 5 questions. अगर इनमें से एक भी तुम्हारा राइट आता है तो यू विल गेट अ +4 एंड बाकी 4 रॉन्ग भी जाते हैं तो यू विल गेट अ -4, जिसकी वजह से योर टोटल नेगेटिव मार्किंग विल बी 0. ये क्वेश्चन का +4 मिल गया, ये क्वेश्चन का -4 मिल गया. बट अगर तुम्हारा एक भी राइट नहीं आता, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज हर 5 में से अगर तुक्का भी अगर मारता है इंसान 5 क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस का, तो भी एक आध ऑप्शन तो राइट आ ही जाएगा. यू नो, आई एम टेलिंग यू अ वेरी मैथ कॉन्सेप्ट ओवर हियर. ओके, तो तुम ऐसा करना कि ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बट तुम्हें कंफर्म होना चाहिए कि जो 2 ऑप्शन तुमने रखे हैं उनमें से एक आंसर है. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर इसमें से 2 क्वेश्चन अगर तुम्हारे राइट आते हैं तो +8 एंड इनका -3, तो हो जाएगा +5. अगर 3 राइट आते हैं तो +12 एंड -2 +10. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. जस्ट अगर 5 में से एक तो राइट होना ही चाहिए यार. अगर इतना भी नहीं आ रहा देन यू शुड से दैट तुम्हारा नसीब ही खराब है. बट यू नो, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन मोर क्वेश्चन पेपर्स to put this into practice. Now the final tip, rather than a tip, this is something what you should start getting in your daily practice, that is reading NCERT biology ki 2 units every day for the last 2 months. I swear by this tip that I used to dedicate 2 hours of my day to reading biology NCERT every day, and I proudly say that I read both 11th and 12th NCERT almost like 25 to 30 times each. And you could check out my biology strategy video. In that I've told about this in a detailed way. How can you accomplish this? देखो, फर्स्ट टाइम जब भी तुम रीड करोगे तभी तुम्हें टाइम लगेगा, बट बाय द टाइम आई रीच्ड द लास्ट 2 months ऑफ माई नीट एग्जाम, मेरी ऑलरेडी 10-10 बार पढ़कर हो चुकी थी. तो मैं क्या करता था, फिर मैं दिन को 2 यूनिट टारगेटेड रखता ही था. मुझे ऐसे लगता था कि एक बड़ा यूनिट, एक छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट, एक छोटा यूनिट, एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू फिनिश द होल like 11th and 12th NCERTs in a duration of 5 days. Okay, ये टिप है. एंड उसके साथ ही जो मैं एक स्केड्यूल में बिठा ली थी ना चीज, दैट वाज सॉल्विंग 1 होल नीट पेपर एवरी डैम डे. बिकॉज ये जो मैंने सारे तुम्हें टेक्निक्स बोले हैं ना, ये तुम प्रैक्टिस में तभी डाल पाओगे इफ यू आर प्रैक्टिसिंग पेपर्स एवरी डे. बिकॉज अनलेस अंटिल यू वोंट मेक मिस्टेक्स, हाउ वुड यू रियलाइज कि तुम कौन से कॉन्सेप्ट में लैक कर रहे हो, कहाँ पे लैक नहीं कर रहे हो. सो दिस इज अ हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नीट पेपर्स. एंड उसके साथ साथ प्लीज डोंट इग्नोर पेपर रिव्यूइंग, बिकॉज पेपर रिव्यूइंग इज वन थिंग व्हाट इज गोइंग टू सेव योर एस. चैलेंज ले लो मेरे से, जो इंसान पेपर रिव्यू करता है एंड वो जो क्वेश्चन गलत गया है उस पर मिनिमम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है दैट वेरी डे, दैट पर्सन विल नेवर मेक द सेम मिस्टेक अगेन. And if you solve like even 5 papers every week, and in a month if you solve like 20 papers, then you have solidified 20 concepts which you were weak at, and you will never go wrong in those 20 concepts. Now of course believe that if you have been sincere with your preparation throughout the whole 2 years, then तो तुम्हारे इतने भी कॉन्सेप्ट्स लैकिंग नहीं होंगे. लाइक आई बिलीव कि जब हम लोग पेपर सॉल्विंग शुरू करते हैं उसके पहले हमारे 60% to 65% कॉन्सेप्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द रिमेनिंग 30-35% कॉन्सेप्ट्स आर वीक, which we need to strengthen by solving papers and practicing, you know. So these were my 4 crisp and short tips which are very practical tips actually. I could have rambled upon like whole schedule tum kaise, because I feel that schedule varies from person to person. Even then, if you want, please check out the last 2 month strategy video. You'll get a much more detailed idea. But I want you to start putting these 4 tips into your practice when you're solving papers every day, so that you don't make the same mistakes what I made, and also anything like and ये मेरा नीट पेपर था. I have kept this paper very safely inside a box which I fondly call as the memory box. तो तुम भी तुम्हारी जब नीट हो जाए तो तुम्हारा नीट पेपर रखना and give these tips to your juniors. That is very necessary, because knowledge बांटने से बढ़ता है, and experience is the thing what teaches a person.
So yeah, both the way around, I'm really feeling happy that it's been 2 years since I began doing YouTube, and thank you guys for all the lovely support what you have been showing to me and my channel. And please continue doing this. If you have any queries about this, you can reach out to me on my Instagram account, that is @medicomusician_, and you could also comment down in the comment section. I try and reply to all the comments, but please यार cutoffs के videos मैंने बना कर रखे हैं. Please check out the cutoff videos if you have doubts regarding the cutoff. And like your suggestions are most welcomed, and thank you guys. Just continue supporting my channel. Now we are currently a family of 4K plus subscribers. Like, I want this number to become larger and larger and larger day by day, because I believe that I want to reach out to maximum people as possible, and I want to make this a platform where we can share much more knowledge. And I really love that some people put their suggestions into the comments, and other people, you guys have a good discussion in the comment section. That is also very effective way, I believe. So till then, take care, all the best for your NEET exams. And also I'm planning once after a few days I'll start making a lot of content regarding what tips for first year writes. So stay tuned on the channel for that also. Till then, take care, bye bye.